बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव लाइफ चैनल। आज मैं आपको एमएस पेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। यू विल स्टे विद मी एंड वॉच माय वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पेंटेबल कर लेते हैं। आज मैं आपको काइट ड्रॉ करना सिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाली शेप ले लेते हैं एंड ड्रॉ एंड देन स्ट्रेट लाइन शिफ्ट के साथ and then curve line, shift प्रेस करके, सॉरी कंट्रोल से, and then यहाँ से आप ले जाएंगे and then curve line लेके को यहाँ पुट कर लेंगे एंड देन के बाद हम इसकी सिलेक्शन कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं और अब हम यहाँ इसका थ्रेड ड्रॉ करते हैं। लाइन बिल्कुल ठीक ले लेते हैं देन यहाँ भी नाउ लेट्स ड्रॉ क्लाउड ड्रॉ करते हैं एंड देन इट इज कंट्रोल प्लस से ड्रॉ करते हैं एंड देन हम बार बार जो बनाएंगे कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, finally clouds have been drawn and then we give you a trick। आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अबाउट स्पैरो कैसे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 F 4 2 6 प्रेस करके Alt X प्रेस करना है। देख सकते हैं हमारी कितनी प्यारी स्पैरो रेडी हो गई है एंड देन डिफरेंट कलर एंड देन F1 F 4 2 6 Alt X एंड देन इसमें कोई और कलर देते हैं एंड देन सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन करके इसको अंदर पुट कर लेंगे एंड देन वन मोर स्पैरो बना लेंगे 1 F 4 2 6 Alt X, then इसको कलर दे लेंगे देन सिलेक्शन करके इसको भी यहाँ पुट कर लेंगे, सॉरी एंड नाउ हम बैकग्राउंड के पहले भी मैं आपको बर्ड्स के बारे में बता चुका हूँ कि कितना स्वाद मिलता है अगर हम इनको दाना डालेंगे, वाटर डालेंगे। एंड नाउ हम कलर बैकग्राउंड कर लेते हैं एंड देन
color the clouds, and then color the kite. So, and then orange. फाइनली हमारी ड्राइंग रेडी हो गई है एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है एंड मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।